Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. It is one more lecture on problem set. In last lecture I solved some problems with you, and today I will continue to solve problems so that you become quite familiar with the problem solving techniques. Again, work, power and energy. Okay, let me start with problem number 1. Let me make the problem to clear the concepts. That is, okay, let me say there's a force 3I plus 4J. This is a force. This is a force, and this force acts on an object. Force acts on an object. On an object. Object. To move it from 0, 0 to suppose A and A coordinates. A force acts on an object and it moves the object from the origin to the position A and A. Through two paths, let me say. Something like this. It is X, it is Y, and it's the origin here, and here the object is brought over here through two paths. It is A is the position coordinate of the object. Finally, the object is taken along this path. It is path 1, and the object is taken along this path. This is path 2. From here to here, then here to here, it is path 2, suppose. It is second path, but this is the whole path from here to here. O is P, it is OM. OMP is another path. Let me call it path second path, but second path is the whole path, OMP. The question is, what is the work done when you get it from directly through path A and when you take it indirectly through path 2, path 1 and path 2. Path 2 is this, OMP. I want to find work done in both the cases. And suppose the work done through path 1 is W1 and work done is through path 2 is W2. It may be an objective. Suppose the options are like this. Option number A is W1 is equal to W2. Option number B, W1 is greater than W2. Option number C is W1 is less than W2. So D, okay, none. Suppose this, I make it in what you call as the objective question. Let me solve this question. First, I will find the work done directly from here to here. Then I will find the work done through this path, OMP. If it is origin is OMP. So this is 45 degrees because of this A and A. From here to here it is A. From here to here it is again A. So let me solve the problem. The force is 3I plus 4J. Don't forget that. Okay. This is the first displacement vector, S. And then this is through second path, this is the displacement, 2 from here to here and here to here. Okay. Now W1, F dot S. What is that F? That is 3I plus 4J. अभी जो लिखा था पहले डॉट करके. What is displacement? This displacement, that is, ये displacement के दो pieces है, AI plus AJ, AI plus AJ. ये आपको पता होना चाहिए. ये जो displacement vector है, इसके दो piece है, वो X piece and Y piece. अच्छा, now what W1 is 3 into A 3A, 4 into A 4A, that is 7A. I got the answer for the work done from OP directly. Then what is the work done, W2? What is the work done when you go through this path to the point P? When you move the particle along this path. So what is the work done? First, it is the work OM
प्लस वर्क MP. व्हाट इज वर्क OM? OM में फोर्स तो वही है जो है 3I प्लस 4J, लेकिन डॉट किसके साथ करोगे आप? इस A के साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है A, दैट इज AI प्लस व्हाट इज WMP? यहां से यहां कितना वर्क हुआ? फोर्स लिखिए आप पहले, 3I प्लस 4J डॉट करके किसके साथ? ये वाला AJ. तो जब इसको डॉट करोगे 3I प्लस डॉट AI, दैट इज 3A, इसके साथ 0 होगा, प्लस 3I डॉट AJ इज 0, 4J डॉट AJ इज 4A, हो गया 7A. दिस इज द आंसर. लेकिन साथ में यहां हमें और एक चीज सीखने को मिलता है. ये जो फोर्स है 3I प्लस 4J, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन इज द सेम थ्रू बोथ द पाथ्स. इस पाथ से भी वही काम हुआ और इस पाथ से भी वही काम हुआ. इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, लेकिन रास्ते दो थे और दोनों रास्तों से काम वही हुआ, वर्क डन सेम हुआ. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3I प्लस 4J इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. वी कैन से दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव. फोर्स इज कंजर्वेटिव. पहला प्रॉब्लम हमने हल कर दिया. चलो, लेट मी गो टू द सेकंड प्रॉब्लम. Let me go to the second problem. Second one. Don't forget that I am doing problems on conservative fields, work done and power. So, second question. U is equal to, okay, 2x square plus 3y plus 4z. This is the potential energy function. Look at the equation. Potential energy becomes is a function of x, y, and z. It's a function of position coordinates, right? And it's a conservative. It's a potential energy is always defined for the conservative fields. What is my question? The question is, what is the force on the object in this potential energy field? What is the force? What is force on the object at point P whose coordinates are x, y and z? इस पर मुझे चाहिए फोर्स, इस पोजीशन पर मुझे फोर्स चाहिए. या अगर आप कंक्रीटली बताना चाहेंगे किसी खास पोजीशन पर, चलो पोजीशन 1, 1 एंड 1, इस पर मुझे फोर्स चाहिए. तो क्या किया जाए? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया व्हाट इज Fx, फोर्स इन द x डायरेक्शन, दैट इज माइनस del u by del x, differentiation of u with respect to x, partial differentiation, because when you differentiate with respect to x, other coordinates have to remain constant. That's called partial differentiation, right? That is minus, what is differentiation of u? Okay, let me write del by del x. तो u को लिखो सारा यहां पर 2x square plus 3y plus 4z. तो Fx is equal to, तो डिफरेंशिएशन कीजिए माइनस करके. इसका डिफरेंशिएशन है 2 into 2x 4x, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन भी 0. वजह, जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करते होंगे तो उस वक्त आपको y और z कांस्टेंट रखना है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन. यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x partially, then put y and z is equal to, put y and z is as constant. और जब वो कांस्टेंट रहेंगे तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. हमें Fx मिला, दैट इज माइनस 4x. अगर x को वैल्यू देना चाहते हो यहां ही, तो हो गया माइनस 4 इंटू x इज 1, दैट इज 4. मिल गया हमें Fx. तो सिमिलरली वी कैन फाइंड Fy. व्हाट इज Fy? दैट इज माइनस del u by del y, दैट इज माइनस, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करता हूं इस फंक्शन का, इसका हो गया 0, इसका भी हो गया 0 बिकॉज x एंड z हैव टू बी कांस्टेंट. इसका हो गया सिर्फ 3, दैट इज माइनस 3. उसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें y बचा ही नहीं है, तो यू डोंट नीड टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1. अच्छा, नाउ व्हाट इज Fz? माइनस del u by del z माइनस,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z टू दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z इज, इसका हो गया 0, इसका भी 0, इसका 4, तो हो गया -4। तो अब बताइए व्हाट इज फोर्स इक्वल टू, अब बताइए व्हाट इज फोर्स इक्वल टू। द फोर्स इज इक्वल टू, force is a vector and has 3 components. So what is force now equal to? Force is equal to, yes, Fxi plus Fyj plus Fzk. F is equal to, what is Fx? 4, मगर यहां -4 है, -4i -3j -4k. Answer, you got the force. That was the question. Okay. Okay. Third question. This is how we derive force from the energy function. This is how we derive force from the energy function. एनर्जी फंक्शन दिया है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, आप फोर्स निकाल सकते। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, बिकॉज फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है, उसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो fx मिला, विद रिस्पेक्ट टू y fy मिला, विद रिस्पेक्ट टू z fz मिला। तो ठीक, वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस। f इज इक्वल टू 2xy प्लस z, पोटेंशियल एनर्जी रखूंगा यहां पर, जूल्स, दिस इज द जूल्स। फाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट जनरल पॉइंट एक्स वाई जी। यह प्रॉब्लम हम करते हैं। चलिए सोच लीजिए आप, यह पोटेंशियल एनर्जी है, मुझे फोर्स निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी दिया है, फोर्स निकालो, तो क्या करेंगे आप? What you are going to do? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना है अलग अलग से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन, आपको मिला एफ एक्स, फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। आपको इसी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, आपको मिला फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। इसी पोटेंशियल एनर्जी का आपने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी, आपको मिला एफ जेड। सो यू आर गेटिंग एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जी, and finally you can write down the expression for force, fxi plus fyj plus fzk. That is easily done. Okay, now see here, fx, पहली बात तो ये है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये पार्शियल, ये जैसे आपको डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, दैट इज टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ यू। मगर जब पोटेंशियल एनर्जी एक्स, वाई और जी तीनों पर डिपेंड करता हो, एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस सूरत में पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, इट्स ए पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल डेल, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे डी कर्व डी जैसा लिखते हैं ऐसे। उसमें अगर आप कैपिटल डी भी लिखोगे, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट इट मीन्स, तो चलेगा। तो कैपिटल डी भी अगर आप ये डी भी लिखोगे वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू मस्ट नो व्हाट इट मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो माइनस, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x? z is constant, y is constant, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? अगर y constant है, what is differentiation with respect to x? That is 2y, because y is constant, 2 is constant, और x के बगैर ये 2y जो है वो constant है, तो 2y निकलेगा डिफरेंशिएशन इसका तो 0 हो गया, minus 2y. What is fy? fy में ये कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो उस सूरत में क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y? इस y यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के बगैर ये 2x कांस्टेंट है, और ये 2x डिफरेंशिएशन होगा इसका, बिकॉज जब भी सपोज m x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज m, बिकॉज m इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही लिखना पड़ता है, बाकी का 1 है, तो इस y के साथ जो भी कांस्टेंट जुड़ा है वही लिखना है, प्लस ये 0 इज इक्वल टू -2x।
What is different? What is fz? That is minus del u by del z. What is that? Constant, constant, constant. But not because you are differentiating with respect to z. ये तीनों constant है. What about z? That is variable. So it is इसका 1 होगा. That is only 1. Minus तो अपना 1. That's minus 1. ठीक. अब जा करके मुझे निकालना है force. So what is the force? What force you are going to write? F is equal to, yes, Fxi plus Fyj plus Fzk. What is Fx? Minus 2yi Fy minus 2xj plus Fz minus 1k. Answer खत्म हो गया. तो व्हाट वी हैव लर्नड, आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है तो आपको फोर्स चाहिए, डिफरेंशिएट करो, मगर आहिस्ते से करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो पहले, विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, विद रिस्पेक्ट टू जी करो. और ये देख लो, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कांस्टेंट रखो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एज यू नो वो जीरो होता है. अगर अलग है, अगर किसी के साथ जुड़ा है तो वो कांस्टेंट बनकर वही लिखना पड़ता है. जुड़कर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उसको लिखना पड़ेगा ऐसे ही. अगर आइसोलेटेड कांस्टेंट है, अलग थलग कांस्टेंट है, वो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है. अच्छा, नाउ वन मोर क्वेश्चन, वन मोर, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वन, फोर्थ वन, fourth question. Let me make a question fourth on power. Let me make it question 4 on power. So what is the question that I am going to make? चलो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं. A car accelerates. A car of mass भी दे दो, mass of 1000 kg. अच्छा खासा मास होता है कार का, 1000 kg. Accelerates from rest. From rest means initial velocity is 0. From rest to the speed of, okay, क्या कार जब एक्सेलरेट करेगा थोड़ी देर में कितना स्पीड करेगा? ओके, 54 kilometers per hour in 5 seconds. In 5 seconds. Find the power delivered by the engine. Engine ने कितना पावर दिया, मोटर ने कितना पावर डिलीवर किया? This is the question. You can have a pause and look at the question for a while so that we solve it later. तो power is, average power is, हाँ, एवरेज पावर निकालना पड़ेगा. एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. तो हमें देखना है टोटल वर्क डन कितना हुआ. लेकिन अब ये हमेशा आप वर्क के लिए फोर्स ढूंढोगे, डिस्प्लेसमेंट ढूंढोगे, वो भी गलत बात है. वर्क डन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी जहन में रखो. वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट भी, वो भी वर्क डन होता है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्रेव भी. वो तीनों चीजों आपको जहन में रखना है, तब जाकर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ऐसा नहीं कि आपको एक खास फॉर्मूला याद है तो आप उसी के पीछे आप इर्द गिर्द घूमते रहोगे. You have to have everything in your mind, whatever you learn, because what I have been repeatedly telling you, जो लेक्चर्स है उनको अच्छी तरह से मतलब वॉच करो. उनको मे बी यू मे हैव टू वॉच इट 2 or 3 times, ताकि वो फॉर्मूला जो मैंने दिया है, जो मैंने इक्वेशंस दिए हैं, वो याद रखो. उनको प्रैक्टिस करो. जब प्रैक्टिस किया तब आपके जहन में कुछ रहता है. बट व्हेन यू पुट दैट प्रैक्टिस, पुट दोज इक्वेशंस व्हिच यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड, व्हेन यू पुट देम टू प्रैक्टिस, तब वो याद अच्छी तरह से हो जाती है, बिकॉज नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग विद देम. तो यही है, मतलब यहां पर मुझे पावर निकालना है और पावर के लिए मुझे वर्क जरूरत है. आप कहेंगे सर फोर्स तो दिया नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? और वो बात आप भूल गए जब मैंने कहा कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉट ओनली वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स. लेकिन यहां तो सिर्फ इंजन ही काम कर रहा है ना, मोटर ही काम कर रहा है. तो वर्क डन बाय द मोटर, इसको देख लो अच्छी तरह से. ये देखिए,
मैं आपको ये बताता हूं कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हैव ए लुक। हो सकता है ये क्वेश्चन एक ही मिनट में हो जाए, एक ही मिनट में हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इट्स फोर्थ, ओके, इट्स ऑलरेडी फोर्थ। ये आपका कॉर है, इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनली विद इन 5 सेकेंड्स इसका वेलोसिटी हो जाता है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा बिकॉज वी ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें मीटर, सेकंड और केजी, पूरा मीटर, सेकंड और केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर एक चीज को। इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, 3 ये हुआ 15 मीटर्स पर सेकंड कन्वर्ट करके, 15 मीटर्स पर सेकंड कन्वर्ट करके। अच्छा, मुझे बताइए व्हाट इज वर्क डन, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एज यू नो, अगर आपको याद होगा अभी भी मेरा लेक्चर अगर आपने वॉच किया हो या किसी का भी लेक्चर वॉच किया हो, उसने भी यही कहा होगा कि वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ये हुआ वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m हुआ, अगर आपको इसका मास हमने क्या लिया था, हाँ 1000 लिया था। व्हाट इज v? 15 का स्क्वायर माइनस ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये वर्क डन हुआ 1/2 1000 इंटू 15 इंटू 15 225। हाँ, फिलहाल रहने दो इसको। अब एवरेज पावर P एवरेज, एक तो हुआ वर्क जितना हुआ इस दौरान, दूसरा हुआ टाइम डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज पावर इज वर्क डन इन 1 सेकेंड, इट इज वर्क डन इन 5 सेकेंड्स। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन इन 5 seconds, but we have to find work done in 1 second. That is W, that is 1/2 1000 into 225 whole divided by 5 seconds. तो क्या किया जाए, इसको कर दो 5 4s are 25। ठीक है ना? तो ये हुआ 45,000 by 2, ये हुआ 22500। What answer? You can check it out. ये फिजिक्स नहीं है, यहां से यहां ये एनालिसिस है, इसमें मेरी गलती हो सकती है लेकिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये आप कर लो और ये आंसर आना चाहिए। फिजिक्स ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फिजिक्स है। शायद ये भी फिजिक्स है, बाकी जो भी है ये एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस, जो थोड़ा सा प्रैक्टिस लेकर के आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट मी गो टू द फिफ्थ प्रॉब्लम। Fifth one. Fifth one. Fifth. Okay, let me make a problem. A 60 kg man goes upstairs, staircase, it goes up. Let me write. A 60 kg man goes upstairs in 12 seconds. Okay. And a 50 kg man goes up the stairs, the same stairs in 11 seconds. What's the question? 60 kg man goes upstairs in 12 seconds and 50 kg man goes up the same stairs in 11 seconds. What is the ratio? What's the ratio of rate of doing work? Rate of doing work. ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक।
मतलब इसका पावर डिवाइड बाय इसका पावर, P1 इसका, P2 इसका, दोनों को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों को। लेकिन P1 कितना है? जब when the man goes upstairs, he has to sustain his weight, he has to produce upward force equal to its weight. तो कितना अपवर्ड फोर्स करेगा? mg, जो इसका वेट है उतना इसको अपवर्ड फोर्स देना पड़ेगा, mg अपवर्ड फोर्स, he creates mg upward force. mg is the upward force and let me say h is the height of the stairs. So how much work he has done? m1gh divided by that 12 seconds. This much of work has been done in 12 seconds. What about the second person? उसका मास कम है ना, he does not have to create the same amount of force in the upward direction because his weight is less. His weight is less. So it is m2gh because same height, stair का height same है, by 11. ये दोनों को डिवाइड करने से आपको आंसर मिलेगा. इसको he has to create more force in the upward direction, he has to create less force in the upward direction, but he does the job in 12 seconds, he does the same amount of job in 11 seconds. So what's the ratio? ये gh खत्म हो जाएगा, ये हुआ m1 by m2 into 11 ऊपर by 12. m1 is what? 60 by 50 into 11 by 12. 5, 10. 11 by 10 is the answer. That is the answer. Please have a look and just concentrate for a while what I am doing. फिर से बताता हूं, अगर if you listen to me. A person is moving upstairs, he has to balance his weight. He creates upward force, mg force, because his weight is mg downwards. He has to create equal amount of force in the upward direction, and he goes up the stairs. So how much work he is doing? Mg, that is the force, into h. In how much time? 12 seconds. So you divide by 12 seconds, you get the power, his power. If he goes quickly, his power is more. If he goes slowly, his power is less. Sixth question. Sixth question. Sixth question. Let me make the sixth question on power. Sixth question. Sixth question. A train is moving with a constant velocity of v is equal to 2i plus 3j minus 7k, and a force of F is equal to 3i plus 4j plus 3k is needed to sustain the constant velocity, against drag forces. What is power of the engine? What is power of the engine? यह है क्वेश्चन. मैं समझाना चाहता हूं. A train is moving with a constant velocity, right? Do you think for constant velocity the engine does not need to create any force in the forward direction? Possibly you may be tempted to believe that, क्योंकि velocity constant है और engine को कोई force आगे नहीं देना पड़ता है. लेकिन नहीं, वो velocity sustain करने के लिए, वो velocity constant रखने के लिए engine को forward force देना पड़ेगा. Because forward force is fighting the backward drag force. That is frictional force. That is other drag force. So many forces are in the back direction. उन force को fight करने के लिए उसको आगे force देना पड़ेगा. जब वो आगे force देता है, वो पीछे वाले frictional force को balance करके तभी तो उसका velocity constant रहता है. So to maintain the constant velocity, the total force must be zero. That is real. That is true. But it must be forward force should equal the backward forces. So the engine creates a force in the forward direction. That force is this, to kill the backward frictional forces, to sustain the constant velocity. Constant velocity sustain करने के लिए भी force जरूरी है forward में. It is the net force which is zero.
ओके, व्हाट्स पावर ऑफ द इंजन? देखिए मैं कैसे करता हूं. पावर F dot V, simple as that. If you remember the equations, F is that is 3I plus 4J plus 3K. डॉट किसके साथ करना है? 2I plus 3J minus 7K. जरा कर दीजिए डॉट. 3 into 2 6 plus 4 into 3 12. 7 into 3, इसको प्लस कर दीजिए, यहां प्लस. 7 into 3, that is 21. So how much is the force? 18 plus 21. 18 and 21. 39 watt. The train may be a toy train. ऐसा नहीं कि ये मैंने कोई real time problem बनाया. Because when we make arbitrary problems, तो don't expect answers to be matching to the real time situations. ये toy car हो सकता है. Okay, seventh one. Seventh one. Seventh one. Let me make the problem like this. Have a look. It is what you call as a container. It is ground. तो यहां मोटर है लगा हुआ है और यहां वाटर है, इसमें वाटर है, और ये जो मोटर यहां पर है इस वाटर को पंप करता है to the height of 10 meters. This motor pumps what? This motor pumps water from the reservoir up to some container here. It pumps the water out of this reservoir and pumps it up to the container. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे मैं बनाना चाहता हूं. The power of the motor is 2 kilowatt and it raises the water to the height of 10 meters. It raises the water to the height of 10 meters. How much water will be lifted in 1 minute? आंसर मुझे केजी में भी चाहिए और लीटर्स में भी चाहिए. हाउ मेनी लीटर्स? वॉल्यूम भी चाहिए और केजीज में भी चाहिए. तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन? हाउ मच मास इज रेज्ड इन 1 मिनट? 1 मिनट में कितना पानी ऊपर चला जाएगा, वो पानी को रेज करेगा ये मोटर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ मोटर ऑन द ग्राउंड. पानी भी नीचे है ग्राउंड पर, जैसे हमारे घरों में होता है कि वी हैव टू रेज वाटर टू हाइट्स. नीचे वाला पानी ऊपर ले जाना पड़ता है इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स. तो हम मोटर यूज करते हैं. इस मोटर का जो पावर है वो 2 किलोवाट है, होते भी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो हमें देखना है कि अगर दिस वाटर इज टू बी रेज्ड टू द हाइट ऑफ 10 मीटर्स, तो 1 मिनट में ये कितना पानी ले जाएगा ऊपर 10 मीटर में. वॉल्यूम भी केजीज में भी और वॉल्यूम में लीटर्स में आंसर मुझे चाहिए. यू नो 1 kg मीन्स 1 लीटर इन वॉल्यूम. 1 kg ऑफ वाटर मीन्स 1 लीटर इन वॉल्यूम. और जितने केजीज निकलेंगे उतने लीटर्स हमें मिल जाएगा आंसर. अच्छा, तो क्या किया जाए? चलिए करते हैं हम कुछ. देखिए, पावर जो है दैट इज वर्क डन बाय टाइम.
अब देखना है कि how much work is done when water is raised to the height. Water का mass into g, that is force. That force you have to create in the upward direction. mg is the force with which water is pulled down. So that force you have to create in the upward direction. So mg is the force you have to create in the upward direction. And then you raise it to the height of h, let me suppose. So how much work you do? mg force, h height, mgh divided by delta t. तो अब मुझे मास चाहिए, ये मास चाहिए, कितना मास में रेज कर रहा हूं. पावर भी दिया है, जी भी दिया है, जी तो 10 लिया जाएगा, एच भी दिया है, डेल्टा टी टाइम भी दिया है. तो क्या लिखूंगा मैं मास के लिए? m इज इक्वल टू, शाबाश, दैट इज p डेल्टा टी, ये मल्टीप्लाई g इंटू एच इज इक्वल टू, अब क्या करूं, p को लिखूं 2000 वॉट, 2 इंटू 10⁻³ टाइम 60 सेकेंड्स डिवाइड बाई g 10, h 10 मीटर्स. तो ये दो खत्म हो गए इन दो के साथ, 6 2 12, तो 4 zeros ऊपर नीचे 2 zeros, इतने kg, 1200 kg. 1200 kg means 1200 liters in volume. वॉल्यूम में इतना और मास में इतना. With this problem, I end up this lecture. But if you want to do additional objectives and problems, you have to go to my app and download the objectives and questions from there, and do as many as possible. And those questions I will be solving in the course of the lectures. But you have to download literature from my app, and you can download the app from Google Store. Thank you.